अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्विक बुक की क्विज़ नंबर 2 बैच नंबर 4 वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपके सामने क्विज़ ब्लिंक कर रही है, तो ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा और वीडियो के एंड में हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने मार्क्स लिए हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हम क्विज़ ले रहे हैं और ये क्विज़ नंबर 1 भी मैंने सॉल्व की हुई है। तो ये हमारी क्विज़ स्टार्ट हो गई है। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। स्टार्ट क्विज़। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन इन्वेंट्री आइटम इन क्विक बुक? कस्टमर, वेंडर, कंपनी और आइटम लिस्ट। तो क्या क्वेश्चन है कि हम कौन सा इन्वेंट्री आइटम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री आइटम के लिए हम कौन सा टैब यूज़ करेंगे। तो आइटम लिस्ट में जाके हम इन्वेंट्री आइटम करते हैं। ठीक हो गया जी। 7 क्लोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज टाइप ऑफ ए डिस्काउंट, एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस में जाएगा। 7 मूव। Which account on the chart of account is affected when you sell an item? The accounts you selected when you set up the item: other income account, a default sale account set up by Quickbook account are not affected by item sale. क्या कह रहा है सवाल को समझे। विच अकाउंट ऑन द चार्ट ऑफ अकाउंट इज अफेक्टेड व्हेन यू सेल एन आइटम। जब आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट में किस हेड पे जाके वो अफेक्ट होगा। तो अदर इनकम, द अकाउंट सेलेक्टेड व्हेन यू सेट अप आइटम अकाउंट आर इन अफेक्टेड बाय सेल। सेल का ज़ाहिर है अफेक्ट करेगा। व्हाट इज़ एन इन्वेंट्री आइटम इन क्विक बुक? गुड परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज, गुड परचेज फॉर डिस्काउंट, गुड परचेज फॉर रीयूज, गुड परचेज फॉर चैरिटी। क्या कहता है कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री आइटम इन क्विक बुक? ये फर्स्ट बनाएगा। गुड परचेज फॉर रीयूज। ठीक है जी। द डिफरेंस बिटवीन वेंडर एंड सप्लायर इज वेंडर और सप्लायर। वेंडर सेल गुड टू यूज, सप्लायर सेल सर्विसेज। बिटवीन वेंडर एंड सप्लायर दोनों एक ही चीज़ है। वी पे वेंडर विच सप्लाई पे अस, दे आर द सेम। Vendor are associated with inventory item, supplier with service item. No, they are the same. दोनों एक ही चीज़ है। जिनसे हम अपना माल लेते हैं वो हमारे वेंडर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द वेंडर नेविगेटर? Which one of the following transaction can be recorded from the vendor navigator? Payment received from customer, pay employees, check written, pay bills. Pay bills. Which one of the following does not have effect on book of account? Inventory item, non-inventory item, sub total item, सब टोटल आइटम। इसका कोई इन्वेंट्री पे फ़र्क नहीं पड़ता।
what is a service item in QuickBook could provide to your customer? Service provide to your customer, product provide to your customer, or item provide to your customer. Service provide to your customer. Question number 9 है, what do you mean by federal sale tax in QuickBook? Tax by federal government, tax by district government, tax by provincial government, tax by institution. Federal, tax by provincial government, tax by district, tax by institution, tax by federal government. First one. 10 of 10 are the accounts receivable that cannot be collected because of their bankruptcy or another reason are termed as collectible accounts, bad customer, doubtful accounts, non-collectible accounts, doubtful accounts. इनको bad debts कहते हैं. ऐसे अकाउंट जो हमें ऐसी अमाउंट जो हमें पेमेंट ना मिले. 7 क्लोज. तो इसको चेक करते हैं. और 2 क्वेश्चन जो है 2 आंसर को गलत दे दिए. 8 इट्स बैड. चलो आप देख लीजिएगा. तो ये थी आज की वीडियो. उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. थैंक्स फॉर वाचिंग. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.